Very good evening and welcome back to Knowledgeist. Do subscribe to Knowledgeist, India's only dedicated professional banking platform. Right, and don't hesitate to join our RRB Scale 2 Scale 3 batch. The batch is on in last 2 years. 1000 around students selected, and now time for the batch. All the links are there in the description. Do find it out. These are your mentors. You know all about this. So I don't have time to discuss all this, but let's break all the records. RBI's new guidelines on general credit card is going to launch a new guidelines for general credit card, and this is going to counter KCC. ठीक है, ये जनरल क्रेडिट कार्ड वो जनरल क्रेडिट कार्ड नहीं है जो आप और हम यूज करते हैं। ये रहेगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जैसे केसीसी किसान के लिए होता था, किसान भी एक तरह का एंटरप्रेन्योर ही है। जैसे किसान मतलब एग्री फिशरी एनिमल हस्बेंड्री के लिए केसीसी होता था, उसी तरह से जो कोई रूरल या फिर सेमी अर्बन सेंटर में जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, उनके लिए नया कार्ड लॉन्च हो रहा है, दैट इज आरबीआई जनरल क्रेडिट कार्ड. सो विल this is going to be very crucial for upcoming RBI grade B and RRB exam. So new thing, it's coming for you. What is there in the guidelines? Hope this time the layout will be very useful for all of you. Okay, this scheme overall covers all credit card catering to non-farm entrepreneurial credit needs. Non-farm entrepreneurial credit needs, जितने भी नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज है, मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटीज है, उनके लिए होने जा रहा है जनरल क्रेडिट कार्ड. So new scheme has been launched. Banks must report to RBI about the credits extended under GCC. अभी भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब केसीसी तो सक्सेस है पूरा का पूरा. ठीक है, केसीसी में अभी क्या चल रहा है, डिजिटल लेंडिंग केसीसी में अभी सैंडबॉक्स के मोड पे है. 2 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया है सैंडबॉक्स में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और उसी साथ साथ जीसीसी का भी लॉन्च हो चुका है. ठीक है, तो ईच बैंक हैज इट्स ओन जीसीसी स्कीम व्हिच मस्ट कंप्लाई विथ आरबीआई गाइडलाइंस. तो जीसीसी स्कीम्स का पूरा जो आउटले है वो डिसाइड होगा अपने बैंक के द्वारा. ओके, सो टीएनसी ऑफ द जीसीसी फ्रेमवर्क should be in line with banks' broad board-approved policies and the framework led by RBI. GCC credit can be issued to individuals or entities sanctioned working capital facilities for non-farm entrepreneurial activities eligible for classification under priority sector guidelines. जैसे आर्टिसंस हैं, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में लगे हुए हैं लोग हैं, वो भी किसान की तरह ही काम करते हैं, मगर उनके लिए कोई स्पेशल जीसीसी तो पहले था, मगर उतना प्रीवैलेंट नहीं था बैंक में, राइट. So for them, GCC has been launched. Anyone who is engaged in an entrepreneurial activity or doing something small scale business for upliftment of society will be now given a general credit card. And generally, it will be initially given to people or given to your customers, those who have availed a working capital facility from you. Maybe it's a small loan. All RBI directions regarding credit cards are applicable for GCC. GCC should be issued in the form of credit card conforming to the stipulations of RBI's master circular, and everything at the end depends on RBI's master circular. Okay, so the okay same thing is there, and details of the GCC scheme. GCC scheme aims to easy access of credit for non-farm activities. GCC credit issued without collateral, making it easier for borrowers to obtain credit. It is without collateral, but in KCC, you know, there is a hypothecation of standing crop up to loan amount of 1.6. Okay, then beyond 1.6, the what you say, the land is mortgaged. Okay, but you cannot issue surface under that land. ठीक है, जो भी लैंड मॉर्गेज है उसके ऊपर आप सरफेसी भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, और 1.6 लाख तक सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग क्रॉप का हाइपोथिकेशन होता था, और बाकी कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं. ठीक है, and the scheme allows banks to offer need based credit limit based on borrowers credit needs and repayment capacity. GCC credit can be issued on household income subject to a ceiling of 40% of annual income of the family members. ठीक है, नंबर्स जहां पे आ रहा है आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है. दिस स्कीम हेल्प्स बैंक्स कंप्लाई विद देयर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट. केसीसी
is a completely PSL product. So similarly, GCC is going to be one of the PSL products. So in other words, I can say to you that GCC is going uh, lend customers in priority sector, those who are not access to KCC. Okay? KCC scheme was for farmers, and beyond KCC, all the priority sector PSL beneficiaries will be able to avail GCC. Got it? Yes, very good evening. वेरी गुड इवनिंग. एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ठीक है, कोई भी डाउट कहाँ पे है आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है, एंड मेक इट इंटरेक्टिव. हाउ यू लाइक द सेशन, प्लीज टेल मी. हाउ यू लाइक द सेशन, प्लीज टेल मी, एंड डू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स. थोड़ा सा 1 सेकेंड आपको लगेगा, बट प्लीज शेयर. इट इट एनहांसेस आवर कॉन्फिडेंस. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अस येट, don't hesitate to subscribe. It gives us immense confidence. Okay, yes. So GCC scheme, what are the challenges and risks? We'll not only be reading about the broad outline of GCC, but also the risks and the concerned topics related to GCC, because anything can be asked in your exams, and nowadays analytical questions are being asked. So GCC scheme, what could be the challenge? It could have lack of credit discipline among borrowers, may lead to default in GCC. See, KCC, initially there was a huge default in KCC, but of late it has been streamlined, because many KCC holders got so much of benefit out of KCC, and they also got immense help to boost their annual income. So they are nowadays uh, they are repaying continuously. Okay, because there is a prompt repayment subsidy, etc., prompt repayment incentives. So people are doing that, but GCC is a new product for non farmers, so there could be some default could arise. Okay, this is point number one. Second point, banks may face credit risk due to non repayment. It's, you know that if NPA is there, then it's a counterparty risk. If somebody defaults in a loan, which is other words told as credit risk, and in more banking terms, it will be told as counterparty risk. Okay, counterparty risk. GCC credit may lead to over indebtedness among borrowers, especially those with limited repayment capacity. ठीक है, और ये तो बैंक में तो टारगेट है, तो किसी को भी जेसीसी चिपका देंगे जब टारगेट एनरोल होगा. तो जो बोरोवर्स हैं, जो ऑलरेडी टाइट फिनेंशियल कंडीशन में है, दे विल आल्सो फाइंड इट difficult for them to repay. Okay, for customers it could be a burden too. What are the regulatory frameworks for the same? RBI's new guidelines for GCC scheme aims to bring uniformity in the credit card segment and improve credit discipline among borrowers. The guidelines requires banks to report the RBI about the credit extended in GCC, and you know there are various forms, and every bank, every financial institution reports all their financial stats टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो अपने सारे डाटा आरबीआई को देते हैं, तो इसका भी रिपोर्ट देना होगा. ओके ओके, एंड फॉर दैट दे शुड हैव ए board approved policy and framework. Based on RBI's framework, the board should provide a dedicated framework for GCC. Okay, and it should also comply with PSL terms.